The first part for June 2014, paper 1-2. Let's look at the first part. Evaluate 12 plus 8 divided by 9 minus 5. How will you do this one, बच्चों? BODMAS, very good. BODMAS क्या कहता है पहले? फर्स्ट ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करो. डू नॉट यूज कैलकुलेटर्स. 12 प्लस 8 एज इट इज रहेगा. डिवाइडेड बाय 9 माइनस 5 इज 4. उसके बाद एक और चीज, प्लस 8 इज डिवाइडिंग बाय 4. साइन का ख्याल रखना है. प्लस 8 डिवाइडेड बाय 4 इज व्हाट? +2 हो जाएगा. सही है. 12 प्लस 2 इज 14. क्लियर है? Okay, the next one, the question says evaluate this. इसको कैसे evaluate करते हैं? 0.018 is divided by 0.06. तो डेसिमल में हम डिविजन्स अवॉइड करते हैं. तो डेसिमल्स रिमूव करने के लिए कितने डेसिमल्स मूव, हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस विल वी नीड टू मूव? ऐसे नहीं कर सकते, दोनों में सेम करना होगा आपको. डिसाइड करो, 3 करें या 2. 3 ही करते हैं, दोनों में 3 करते हैं. सही है ना? दैट मीन्स हम न्यूमरेटर को भी 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिनोमिनेटर को भी वी आर मल्टीप्लाइंग इट बाय 1000. तो करो 3 डेसिमल 18 अपॉन कितना हो जाएगा ये? 60. क्लियर है? नाउ कैन यू सिंप्लीफाई 18 इन 60? किससे सिंप्लीफाई होंगे? सिंप्लीफाइड डायरेक्टली विद 6. अगर आपको अच्छे से आता है, 6 3s are and 6 3/10. and what is 3/10? 0.3. खास 3/10 भी छोड़ सकते हो, दैट इज फाइन. एंड 0.3 भी कर सकते हो. दोनों वैल्यूज एक ही हैं. बोथ मीन द सेम थिंग. वी डिसाइडेड कि डेसिमल में डिवीजन नहीं करेंगे, मुश्किल हो जाता है हमारे लिए समझना. तो हमने डिसाइड करा, ऊपर वाला कह रहा है दैट in the numerator we need to move 3 decimal places to remove decimal. तो denominator में we need to move 2 decimal places. तो ये नहीं कर सकते कि न्यूमरेटर में 3 मूव करें, डिनोमिनेटर में 2. तो हमने कहा चलते रहते 3 डेसिमल प्लेस मूव करते हैं. ये तो मूव कर रहे हैं. 3 डेसिमल मूव करने का मतलब व्हाट डज इट मीन? इट मींस यू आर मल्टीप्लाइंग इट बाय 1000. ऐसे थोड़ी कि दिल करा और डेसिमल यू मूव कर दिए. इसका मतलब ये होता है कि वी आर टेक्निकली मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय 1000. ठीक है बेटे? 2 से करते तो नीचे तो 6 आ रहा था, ऊपर 1.8 रहता, फिर वो डेसिमल डिवीजन हो जाती है हमारे लिए. इज दिस क्लियर? 2 डेसिमल प्लेस मूव करने के लिए वी वुड हैव हैड टू मल्टीप्लाई इट बाय 100. तो बहुत सारे देयर आर मेनी थिंग्स इन मैथ्स दैट यू डू एज पैटर्न्स, बट आई अर्ज यू टू अंडरस्टैंड इट्स कॉन्सेप्ट्स एज वेल. ये नहीं कि बस कर रहे हैं तो कर रहे हैं, उसके कॉन्सेप्ट भी समझो ताकि मुश्किल सवाल हो जाए. ओके, व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट ए. Tasneem records the temperature in degrees centigrade at 6 a.m. every day for 10 days. Find the difference between the highest and the lowest temperature. Difference निकालने के लिए highest value minus lowest value लेते हैं. What is the highest value? 2 है, गौर से देख लो जरा सब में. 2 minus what is the lowest value? -7. तो -7, तो डिफरेंस ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? डिफरेंस हमेशा हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू करते हैं. इफ द लोअर वैल्यू इज नेगेटिव, ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा 2 + 7 विच इज 9. थोड़ी सी स्पीड दिखाओ प्लीज एंड मेक श्योर यू राइट एवरीथिंग डाउन. इफ यू आर नॉट राइटिंग थिंग्स डाउन देन यू आर जस्ट not understanding it well enough. Next part says find the median temperature. How do we find the median temperature? Very good. सबसे पहले we need to arrange all of these values. सबसे छोटी कौन सी है इसमें? -7. उसके बाद -6. उसके बाद -5. बताता हूँ. मीडियन इज द मिडिल वैल्यू, बट यू नीड टू अरेंज द डेटा फर्स्ट. उसके बगैर मिडिल नहीं हो सकता. ठीक है? -5 एंड आफ्टर दैट -3. उसके बाद देन -2, then -1, then 0, then you have missed out on a value. ये 8 9 वैल्यूज हैं, 10 नहीं है. -1 2 दफा है ना, गौर से देखो.
once you have arranged the data, then median का कोई formula नहीं है, but median position you can find obviously, which is n plus 1 divided by 2. How many readings do we have? How many readings do we have? 10. So median की position 10 plus 1 divided by 2, which is 5. और 5.5 तो कोई position होती ही नहीं है. So what does that mean? We will take the 5th position plus the 6th position and divide it by 2. What is on the 5th position? जरा देखो. -3 and -2. So what will we do? -3 plus -2. What is our median? -2.5. नहीं, कोई बात नहीं, आने दो, डजंट मैटर. पोजीशन डेसिमल में नहीं हो सकती. यू कैन नॉट टेल मी कि सर ये 5.5 पोजीशन है. डेसिमल में आना इज नॉट एन इशू. मीडियन निकालना, मीडियन इज द मिडिल वैल्यू. सही है. अगर इफ यू हैव इवन नंबर्स तो मिडिल वैल्यूज हमेशा 2 आएंगी. उन 2 को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते हैं, देन वी गेट आवर मीडियन. इफ यू हैव ऑड नंबर ऑफ डेटा, 5 लोग हैं, तो 3rd पोजीशन पे मीडियन आ जाएगा सबको. फॉर्मूला तो यूज नहीं कर रहे. फॉर्मूला इज जस्ट टू अंडरस्टैंड कि मिडिल कैसे निकालते हैं. कोई फॉर्मूला यूजेज इज नॉट अ कंपल्शन. इट इज जस्ट टू फाइंड द मिडिल एंड टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि वंस यू नीड टू फाइंड डू द डिफिकल्ट क्वेश्चंस, तो आप उस वक्त कैसे करेंगे. Okay, now question number 3. What does it say? Write down a decimal value of n that satisfies this inequality. अब आपके लिए decimal value fraction से निकालना लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल है काम. बहुत सारे तरीके हैं काम करने के. There is not one way. 3/4 और 7/8 के बीच में. I'm just asking you, if I would have asked you fractional values, आप मुझे कुछ fractional values इनके बता सकते हैं? और से ऑब्जर्व करो जरा. 3/4 से 7/8. और से देखो, what is the difference numerator and denominator में क्या फर्क है? The numerator is 1 less than the denominator. 4/5 भी हो सकता था. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर? सही है. अदर वे, 3/4 को आप पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लें. क्या आता है 3/4 डेसिमल में? 0. बहुत कॉमन फ्रैक्शन है 3/4. बहुत कॉमन डेसिमल है. बिल्कुल बिल्कुल, आप डिवीजन वही करना है. दैट इज हाउ यू नीड टू डू. क्या आ रहा है 3/4? And what about 7/8? 7 क्यों करेंगे बेटे? देखो देखो, 3 इधर आएगा और 4 इधर आएगा. 0. 0.75. एंड व्हाट अबाउट 7/8? 7/8 भी पूरा डेसिमल बताने की जरूरत नहीं है. जस्ट टेल मी द स्टार्टिंग. 0 पॉइंट के आगे 1-2 चीज बता दो तो समझ में आ जाएगा. स्टार्ट तो करो करना. 7/8 अगर करोगे बेटे, 7 इधर आ गया, 8 इधर आ गया, तो 0.88 are 64. आपने बस ये देखना है कि 0.8 कुछ है. 0.8 समथिंग. इज दैट राइट बेटे? तो अब पूरा निकालने की भी जरूरत नहीं है. 0.75 और 0.8 के बीच में कोई भी डेसिमल बता दो मुझे. हाँ, 82 तक भी मत जाओ ना. मैं वैसे ही कह रहा हूँ. 0.76, 0.77, 0.78, 0.79. तो ये कोई भी आप डिसाइड करके कह सकते हैं कि n की एक पर्टिकुलर वैल्यू 0.76 ले लो. ले रहे नहीं है तो पूरा निकालने की भी जरूरत नहीं है. आप जब 7/8 कर रहे हैं तो 0.8 आया, तो आप कह रहे हैं इट इज 0.8 समथिंग. इज दैट राइट?
0.8 समथिंग है ना, उसके बीच से कोई भी डेसिमल लिख दो, 0.75 0.8 समथिंग का। इज दिस क्लियर? ओके, राइट डाउन अ फ्रैक्शनल वैल्यू। मैंने पहले ही बता दिया था फ्रैक्शनल भी आ सकती है। उसके लिए क्या बताया मैंने, कोई भी फ्रैक्शन ले लो। दो तरीके, या तो आप डायरेक्ट बता दे कि एन की वैल्यू 4/5 हो सकती है, या 5/6 हो सकती है, या 6/7 हो सकती है। कॉमन इजी फ्रैक्शन है। अनदर वे टू डू इट कि दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दें आप, तो बिल्कुल इन बिटवीन मिडिल वाली वैल्यू आ जाती है। सही है, दैट वाज अनदर पैटर्न। देखा ना, 3/4 है। क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर? न्यूमरेटर एक छोटा है, 3/4। उसके बाद क्या आता? 4/5, फिर 5/6, फिर 6/7, फिर 7/8। नहीं, इनमें से कोई एक लिखेंगे, जस्ट वन वैल्यू। आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि इफ यू आर एबल टू ऑब्जर्व दैट पैटर्न। दूसरा तरीका क्या था, इन बिटवीन वैल्यू लिखनी है, यू ऐड बोथ द वैल्यूज एंड यू डिवाइड बाय 2, तो बीच की बिल्कुल मिडिल वाली वैल्यू आ जाती है। वो भी एक तरीका है। ठीक है, अंडरस्टैंड बोथ वेज, एक पे फिक्स मत हो जाओ। Okay, now here is the next part is about reading a table properly. कि आप टेबल को कैसे रीड करते हैं। Here is part of a bus timetable. How long does the bus take to get from the bus station to the airport? Yes, class. Bus station to the airport. Plus 10:43 पे it comes gets to the airport. 9:56 पे it left. ऐड करेंगे, सोच समझ के बताओ। ये 9:46, 56, 10:43 तो टाइम्स हैं। Someone is asking you the duration. You leave your home at 7, you come to school at 8. How long does it take you? क्या करेंगे पहले ये तो बताओ, अंडरस्टैंड द ऑपरेशन फर्स्ट, क्या करेंगे? हाँ, तो माइनस करेंगे, वील सबट्रैक्ट इट। वो 10:43 में से वी नीड टू सबट्रैक्ट, गौर से देखना जरा, 9:56। आई टेल यू द ट्रिक। इफ समवन टेल्स यू, मेरी बात गौर सुनना, कि इट्स 10:80 हो रहे हैं, इज दैट राइट और रॉन्ग? 10:80। इट इज रॉन्ग टू टेल समवन दिस। हाँ, किसी को बताना गलत है ये, बट यू कैन यूज इट इन योर कैलकुलेशंस। अब मिनट्स कितने ऊपर वाले के? 43। और नीचे वाले के मिनट्स कितने हैं? 56। इफ आई ट्राई टू सब्ट्रैक्ट देम, ये माइनस नहीं होंगे। सो व्हाट इज द बेटर वे टू सब्ट्रैक्ट देम? आप कहें 9 और 60 इसमें ऐड कर दें, 103 मिनट्स आप करें। क्लियर है? और उसमें से फिर आप माइनस करें 9 एंड 56। मिनट से मिनट्स को माइनस करें, और आर से आर्स ही माइनस होते हैं। ओनली सेम यूनिट्स कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। अब आप इनको माइनस कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करो पहले, तो 1 कैरी हो जाएगा यहाँ पे। 13 - 6 इज, पहले यहाँ 1 से कैरी करो। आवर्स तो कैंसिल होकर 0 आवर्स बचेंगे, तो जस्ट मिनट्स आएंगे। कितना आ रहा है बेटे? 47 मिनट्स। और से देख लो, पहले 1 है, 1 से 1 कैरी हुआ, 10 हुआ, 10 में से 1 कैरी हुआ, 13, एंड यहाँ पे 9 बचा। 13 - 6 is 7, 9 - 5 is 4, तो 47 minutes is your duration. Chris has a flight from the airport at 14:05. He must check in at the airport 2 hours before the flight. So at what time he needs to be at the airport? लिखते जाओ इसको साथ साथ। नहीं नहीं नहीं, गलत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना। आप जहाँ पहुंचते हैं माइनस जहाँ से निकलते हैं उसको करते हैं। अब व्हाट डिड वी डू, हमने 1 आवर कम करके 60 मिनट बढ़ा दिए। ये वाला काम तो हम कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशंस। तो ही नीड्स टू बी एट द एयरपोर्ट एट 12:05। सही है, ये हमने डिसाइड कर लिया। ही विल टेक अ बस टू द एयरपोर्ट फ्रॉम द सिटी हॉल। कहाँ से बस लेगा वो? सिटी हॉल से लेगा। राइट डाउन द लेटेस्ट टाइम दैट दिस कैन टेक a bus from the city hall to be at the airport.
एयरपोर्ट पर उसको कितने बजे होना है? 12:05 पे। तो कौन सी बस है जो 12:05 से पहले पहुंचा रही है? रिमेंबर, डू नॉट बी अ पाकिस्तानी, और ये मत देखो कि क्लोज कौन सा पहुंचा रही है। You must think in such a way that which of these buses arrives at the airport before the time. The second one 11:13 वाली, ये वाली भी 11:43, ये वाली भी, तीनों तीनों all three ये वही तो बोल रहा हूँ, he needs to be at the airport at 12:05. He can either be at the airport at 10:43, or he can be at the airport at 11:13, or he can be at the airport at 11:43. Is this clear? ये सब है ना, ये नहीं हो सकता 12:13। क्यों? क्योंकि 12:05 पे ही नीड्स टू बी देयर, ये 8 मिनट लेट पहुंचाएगी उसे, तो ये वाली तो नहीं। ओके, व्हाट इफ ही टेक्स दिस बस? अगर 11:43 वाली लेता है तो सिटी हॉल से कितने बजे उसको बस लेनी पड़ेगी? सिटी हॉल 11:03. So that is what the question is asking you. Write down the latest time that Chris can take the bus from the city hall. So he'll take the bus from the city hall. जी बेटे बोले, रीड बेटे, रीड 14:05 पे फ्लाइट है। सो गेटिंग 12:05 आया कैसे था? 2 घंटे, तो कितनी दफा 2 घंटे माइनस करें? रीड द क्वेश्चन बच्चे। ओके, क्लियर है? लिखते जाओ इसको बेटे, लिख के करो, सो दैट हैव दिस एंटायर थिंग। लिखो, express this in standard form. How many decimals do we need to move? 5 decimals, 8.52, and the exponent will be -5. Remember, in your calculations, you do not need to keep your values in standard form. Calculations के वक्त you can leave the standard form. कैसे करोगे पहले मुझे बताओ? फिर करो, give it a try. 3 exponent 5 है. Can I write it as 30 exponent 4? Yes, I can. नीचे I'll write it as this. अब क्या हुआ, 6 और 30 आराम से कैंसिल हो गए, and I'm left with 5. बताता हूँ, 4 minus -2, तो 5 exponent 6. 3 exponent 5 है, I've converted it into 30 exponent 4. The value still remains the same. Remember, the value of the number does not change. 3 exponent 5, 30 exponent 4, it's the same value. I'm repeating myself. You do not need to keep your values in standard form in your calculations. Now, final answer standard form होना जरूरी है. So 3 exponent 5 का 30 exponent 4 लिख लें, no worries. As long as the value of ऊपर भी, what did you do? This is the same value as this. Both of them have no difference. This is just written in a different form. 3 into 10 to the power 5. That means 3 into 100,000. And I'm telling you 30 into 10,000. ये ट्रिक सीखो for difficult questions. सारी जो बातें बता रहा है, I know you people can get your answers through different ways as well. But इसको सीखो, लिख के करो, and if you're not writing it down, फिर बात नहीं समझ में आएगी. Okay, class. Yes. What is the order of rotational symmetry? If I rotate it 360 degrees, how often will I get the same shape? एक ही दफा सेम शेप आएगा, सोचो जरा. रोटेट इट. When this flag, ये वाला फ्लैग जब यहाँ पर आएगा 3 दफा, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री 3.
और से if you have this one सही है and if you rotate it और I'll rotate it और से देखना when do you end up getting the same shape एक दफा this is once this is twice then you complete the 360 this is twice so the order of rotation symmetry is लिख लो इसको and how many lines of symmetry 0 कौन सी है बताओ सिमेट्री इक्वल नहीं है मिरर होना चाहिए कि इफ आई फोल्ड ऑन योर लाइन ऑफ सिमेट्री एवरीथिंग मस्ट ओवरलैप विद ईच अदर okay shade into more small squares in this shape to make a pattern with exactly 2 lines of symmetry बनाओ स्क्वायर ग्रिड को बनाओ अपने पास and then give it a try कोई बात नहीं now with these two squares shaded are these the two lines that are the lines of symmetry और से देखो अगर मैं जो line that I am telling you is the line of symmetry if you fold on that line do the shaded ones overlap with the shaded ones they do we want them to overlap क्यों नहीं हो रहा और से देखो सारे शेडेड हो गए ना फिर तो समझ आ रही है बात ऑल शेडेड आर अलाइक हमने अलग शेड किया बट कंसिडरिंग द फैक्ट ऑल शेडेड आर अलाइक नाउ क्लियर है बेटा या नहीं है स्क्वायर की अपनी चार देयर आर 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर अ स्क्वायर okay the cost of a mirror is directly proportional to the square of its width प्लीज इसमें जो मैं मेथड बताऊं दोनों को समझ के करना डू नॉट जस्ट हैप्पैज़र्डली रन कॉस्ट को हम C ले लेते हैं और विड्थ को W ले लेते हैं so question is telling me कि cost is directly proportional to the square of its width right right बच्चों okay, फिर हम क्या कहते हैं कि when we remove the proportionality sign we put an equal to the KW square cost was 24 when the width was 40 can you find the value of K इसके लिए ट्रिक ये है कि 40 into 40 लिख लो 3 बन रहा है 4 10s are and 4 6 are there 4 3s are and 4 what do you get K is 3 upon 200 okay I'm trusting you with the value so C is equals to 3 W square upon 200 so question was asking me the cost when the width was 60 so 60 into 60 लिख रहा हूँ instead of squaring क्योंकि यही काम हमें करना है eventually ऊपर नीचे multiplier so we can cancel out 0 0 cancel 0 0 cancel 2 1s are 2 3s are so 6 3 or 3 क्या आंसर cost is कैंसिलेशन समझो वन ये एक जीरो और एक जीरो कैंसिल ये एक जीरो और एक जीरो कैंसिल 2 1s are and 2 3s are so what are you left with 3 6 and 3 so what is the cost 3 6 are या पहले 3 3s are कर लो 9 9 into 6 is लिख के करो you're not achieving anything 54 another better way to do this question is when two things are directly proportional their ratio is always constant I can say cost 1 upon W1 का square is cost 2 upon W2 का square cost पहले कितनी थी मैं कह लूं cost मुझे नहीं पता जब width 60 है और cost was 24 when the width was 40 so the cost will be 24 upon 40 times 40 into 60 times 60 0 0 cancel simplify करो ज्यादा आसानी से हो जाएगा
0 and 0 0 0 cancel, 4 से करो, 4 1s are, 4 3s are, फिर 4 2s are, 2 3s are. Eventually you'll get the same value as. Please do not ignore this method. Even in last year's paper, there was a very difficult question of proportionality जिसमें उसने 2-3 चीजों को दे दिया था. And students who were not well aware of these methods became very confused in those questions. Multiple methods are there for your ease. Do not treat them as options. सही है? Same thing, you eventually have to tell the final value, ना. Simplify तो आपको करना है sooner or later. For directly proportional quantities, their ratios are the same. For inversely proportional quantities, their products are the same. You two people do it in physics as well. P1 V1 is equal to P2 V2. So pressure and volume are inversely proportional. That is why their products are constant. Is this clear, class? Okay, what type of special triangle is triangle ABT? Yes, बच्चों. ABT. इक्विलेटरल के लिए 60 होने जरूरी है सारे एंगल्स. Isosceles. AT और BT की लेंथ सेम है. टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट जो आ रही होती हैं equal lengths पे कट करती हैं. AT and BT length is the same, so it is an isosceles triangle. Work out AOB. बीच वाला एंगल निकालो. If this is 64, can you tell me the angle अंदर कितना होगा? Very good. This is the radius. Very good. So you are telling me, नाम लिख कर देखो जरा. OAB. You are telling me angle OAB is 90 minus 64. What is that? हाँ, लेकिन वो नहीं, हमें AOB चाहिए ना. 26. हाँ, ट्राइंगल से भी कर सकते हैं ना. अंदर वाला जो ट्राइंगल है, वी आर ट्राइंग टू यूज दैट. तो ट्राइंगल अंदर है. इफ दिस इज 26 और 36, 26, दिस इज 26, तो ये वाला भी कितना होगा? तो दोनों 26 हैं, तो कैन यू फाइंड द अदर वन? AOB plus 2 times 26 is 180. Learn to make these equations. Please learn to make such equations, because इसी तरह आपको फिर जब अननोन्स के साथ डील करना होता है तो इट्स इजी फॉर यू. सो व्हाट इज एंगल AOB, क्लास? कैसे 52 माइनस किया ना, सही है. सो दैट इज 128 degrees. Again, the next part is also very easy. Yes, class. How do we evaluate this? तो उसके लिए क्या करेंगे? LCM. Do not always focus your mind on multiplying the denominators. Yes, we sometimes have to do it, but focus your mind on getting the LCM. 7 और 4 को multiply करके उनका LCM आता है, but multiplying नहीं. Do not call this cross multiplication. This is not cross multiplication. Understand. In order to add fractions, you want to make the denominators the same. क्योंकि जब ये algebraic आता है ना, तो फिर आप confuse हो जाते हैं. एग्जाम में भी आया था algebraic, एक जगह स्क्वायर था, एक जगह सर अब क्या करें? So do not call this cross multiplication. Cross multiplication is a cross and equal to. This is not cross multiplication. So in order to make the denominator the same, you want कि इस वाले denominator को 4 से कर दूं. So if you are multiplying the denominator by 4, you also have to multiply the numerator by 4. This is what you are doing. In order to multiply this denominator by 7, you are also multiplying the numerator by 7. So ये हो गया 1 times 4 is 4. 28 is the LCM plus 3 times 7. 25 upon 28. सही है बच्चों. Do not call this cross multiplication.
This is not cross multiplication. Okay. How do we simplify these fractions? पहले इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. 3 5s are 15 plus 1 is 16 upon 3 divided by 8 upon 5. So very good. When we convert it into multiplication, we reciprocate 5 over 8. अब क्रॉस कैंसिलेशंस हम कर सकते हैं, and we must do it for our ease. 8 1s are 8 and 8 2s are 16. Now how do we multiply fractions? The numerator multiplies with the numerator and the denominator multiplies with the denominator. So 2 5s are 10 upon 3. So this is 3 whole number 1 upon. तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ऊपर वाला है ना, इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन. किया तो है हमने मिक्स नंबर्स में 10 होल नंबर्स लॉन्ग डिवीजन. समझा नहीं, आई डिड नॉट गेट योर क्वेश्चन. Give me any example that you think is the difficult one. बताओ, कोई भी बताओ. Okay, class. Now the next part says write 405 ये पूरी वैल्यू को 2 significant figures. Which is the first significant figure? 4. Which is the second significant figure? 0. 0 शुरू और एंड में significant नहीं होता, but if it is between two numbers वो significant हो जाता है. इसके आगे अगर 5 है तो ये 0 क्या हो जाएगा? 1. क्यों कर रहे हैं 0 को कन्वर्ट? Question says 3 significant figures. Very good. We will not convert this 4. We will not round off this 0. 5 is the third one. तो इसके आगे 9 है तो ये 5 क्या हो जाएगा? 6. तो बाकी सारे zeros हो जाएंगे हमारे पास. 4 0 6. 5 significant figures. ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा. 4 0 5 9 2, फिर आगे 4 zeros. कर सकते हैं अगर वो 2 significant figure कहता है. लिखो, लिख के करो बच्चों. इफ यू आर नॉट राइटिंग इट डाउन दिस वोंट बी ऑफ एनी हेल्प. by writing each number correct to one significant figure, क्या होगा? what will be the numerator? Significant figure has got nothing to do with decimal. 0 के अलावा every number is significant. 0 if in between any two other numbers becomes significant, और अगर rounding off की मजबूरी हो तब भी 0 becomes significant. 41.3. Very good. Rounded off to 40 हो गया. What about 9.79? 4 है, 4 के आगे क्या है? 1. तो 4 will remain 4, 40 हो जाएगा. 9.79, 9 के आगे क्या है? 7. तो ये 9 आगे राउंड ऑफ होगा 10 into what about this? 0.76 है तो 0.8. पहले 0.8 को 10 से मल्टीप्लाई करो. 40 upon 8 which is The question said Q union R. It means it is either a part of Q or a part of, if दोनों में से किसी एक का भी part है, so you must include that region. तो आपने Q और R दोनों को shade कर लिया. फिर P naught intersection, that means it has to be in P naught and it has to be in Q union R. नहीं, फिर सिर्फ वो बीच वाला जो भी हटा दिया सिर्फ वो रहता, सिर्फ वो रहता. P में भी होना जरूरी है, Q और R में किसी में भी हो, बट P में होना भी जरूरी है. तो it would have been this region जो अभी हमने हटा दिया. ठीक है. Okay, give the next one a read. पहले आराम से पहले सवाल पढ़ते हैं. What pets they own of these children 13? इसमें the keyword is only. Do not assume only and do not ignore only when it is written. Of these 13 children, 13 own a cat, 5 own both a cat and a dog, and 15 own neither a cat nor a dog. बनाओ Venn diagram सबसे पहले.
whenever you start filling a Venn diagram, where should you start filling it from? सबसे इनर मोस्ट से स्टार्ट किया करो। तो सबसे बीच में, डू यू नो कि दोनों, बोथ अ कैट एंड अ डॉग, हाउ मेनी ओन्ड अ कैट एंड अ डॉग बोथ? हम्म, सवाल पढ़ो। कैट ले लिया, और इसको डॉग ले लिया। 5 ओन, 5 हैं जिनके पास दोनों है, राइट? फाइव तो बीच में आ गया। देन 15 ओन नाइदर अ कैट नॉर अ, तो 15 यहाँ बाहर आ जाएगा। ओके, देन 13 on a cat, total 13 cat है, so 8 is cat only, so dog only x हो गया मेरे पास। is that right? Is that right or not? Dog only is x, so x plus 5 plus 8 plus 15 is equals to 40. What is the value of x? Yes बच्चों, read the question. Is the question asking us the same thing? The number of children who own a dog but not a cat, so dog only ही पूछ रहा है वो, so 12 is our answer. कभी कभार the question asks you something else as well. Kindly do read the question. Okay, a cafe sells hot drinks. On Monday, it sells 80 teas, 60 coffees, and 40 hot chocolates. On Tuesday, it sells 70 teas, 90 coffees, and 50 hot chocolates. A cup of tea costs this, this, and this. This is the information M. And what do we need to do? अगर इस तरह लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है? Very good. We'll have to multiply M and N, right? And how do we multiply them? Please be very careful. पहले लिख लो इन दोनों matrices को, so that you know how do we multiply. Yes. शुक्र है याद है, देखा? Good. Good. Zero 0.8, 1 and 1.2. एक चीज और होती है ऐसे ऐसे करने के बाद, एक स्टेप और है. You take the first row, you take the first row and you multiply it by the first column, and then you add all of them. और से देखो, yes. So you will take 80, you will multiply it by 0.8, plus 60 will multiply by 1, plus 40 will multiply by 1.2. Then you take the second row and you multiply it by the first column. So 70 will multiply by 0.8, plus 90 will multiply it by 1, and 50 will multiply by 1.2. You know you have to do it without using your calculators. Please, आराम से, जल्दबाजी नहीं. 80 into 0.8 is, yes बच्चों, 80 into 0.8, 64. 60 तो 60 रहा. 40 into 1.2, 48. एक डेसिमल भी तो पीछे लाओ.
1.2 है ना, 70 into 0.8, 56 plus 90 plus 15 to 1.2, 15 to 1.2 is just take 50 and multiply it by 1.2. पहले do not think of the decimal, जो आंसर आ जाए उसमें फिर एक डेसिमल प्लेस पीछे ले आओ. $60. Then you add so 60, 60 and 48. 100, 168, 172, 90, 60, 150, 206. Yes. So explain what the numbers in your answers represent. ये 172 क्या बता रहा है? The total sales on Monday. The total income on Monday, and 206 is telling the total income on Tuesday. देखो ना गौर से, these were their quantities on Monday and Tuesdays. पहली को row was about Monday, the second row was about Tuesday. So you multiplied it with each of their costs, so you got the total income on Monday and the total income on इस तरह भी लिख सकते हैं हम. 172 is the total income on this 206. Where class? Fx is 2 minus 3x. Find f of -5. How do we do this? Wherever we have जहां x है वहां पर -5 plug in करेंगे. F of -5 is 2 plus 15, which is 17. That means if we input -5, the output is 17. Then the next part is asking us to find the inverse. क्या करते हैं inverse में? Very good. Y को लिख के then x को subject बनाते हैं. 3x is 2 minus y. X is नियरेस्ट मीटर का मतलब है 1 मीटर. वी डिवाइडेड बाय 2 वी गेट 0.5. इसको ऐड करते तो वी वुड हैव गॉट अपर बाउंड. अपर बाउंड ऑफ लेंथ वाज 35. उसको ऐड कर देते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं तो लोअर बाउंड आता है just 35.5 meters. Then part B is asking us work out the lower bound of the perimeter. First, we always make the formula for the quantity that we are supposed to calculate. 2 bracket length plus breadth. तो अगर पेरीमीटर का लोअर बाउंड चाहिए तो लेंथ का भी लोअर बाउंड लेना पड़ेगा और विड्थ का भी. 2 लेंथ का लोअर बाउंड इज 34.5, विड्थ का लोअर बाउंड इज 24.5. पेरीमीटर इज 2, 34.5 प्लस कर लो 59.
So perimeter is 118. Don't worry.